Hello, hello, hello. Yeah, am I audible? So I think four students have joined, and you can start commenting that am I audible or not. Yeah. We'll start our session from four. Okay, so it's four, and I think we can start our session. So during the session, if you people are facing any kind of doubt or any thought that's coming to your mind regarding essays, you can write it in the comment box, and I'll take those doubts towards the end. So the session will goes like this. Uh, in the initial minutes, I'll have a monologue where I'll explain what are the basics of essays, how can you attempt those essays, and how can you expand your thoughts and represent your essay in a good manner in a piece of paper. That will be a kind of monologue from my side. I'll explain the structuring of the essays and various aspects as well. And then I'll open the session for question and answers, where you can ask your questions through chats. You can also ask the questions through chats in the middle of the session as well, which I will take towards the end, right? So yeah, since it's four, and we'll start the session. So essay is a I need not to say that essay is a very important portion of your mains exam, which because it's a single paper, and it contains around 12% of the total marks allotted to your complete mains examination. As far as efforts that you need to put into the essay is concerned, the efforts are relatively minimal as compared to your GS, and the optionals are concerned, with respect to the time that you are putting in your GS and optionals, and with respect to the practice that is required to write a good essay, right? So these two aspects are very important to excel yourself in any of the paper, in GS or in optionals. But in essay, थोड़ा सा काम आसान हो जाता है, because we get the content from GS, we get the content from our optional paper, and the focus that we need to put in is the articulation part of the essay. So the articulation becomes very, very important, and along with articulation, the diversification of the topic, the understanding of the topic, and its representation in a paper is also very important, right? So these three four aspects are very core to the essay writing,
and it reflects what the student is thinking about the topic, what is his or her understanding of the topic, which eventually compels the examiner to read complete essay and give you marks better than others. So that's what the main goal is all about, right? So you all are here to score well in your essays. So yeah, uh, if I start explaining essay, I'll start with how you should be picking the topics in the examination hall, because it eventually becomes very difficult to pick the topic sometimes, and the kind of topics coming these days, it eventually becomes a bit difficult than it was in previous years, because in during these years they are posting multiple philosophical topics, and you need to be very clear on the topic that you are picking in, right? बिकॉज उस टॉपिक को एक्सपैंड करना होगा, यू नीड टू फिल नेक्स्ट 10 to 12 pages विद अ क्वालिटी कंटेंट. सो दैट्स वाई टॉपिक को चूज करना, टॉपिक को एक्सपैंड करना, उसके बारे में ब्रेनस्टॉर्मिंग करना, एंड देन यू नीड टू राइट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यू नीड टू पिक द टॉपिक in which you feel that you are comfortable in. कंफर्टेबिलिटी से कहने का मतलब मेरा ये है कि यू शुड बी कंफर्टेबल इन एक्सपैंडिंग द टॉपिक, you should be comfortable in explaining the core of the topic and relating it to multiple aspects which are related to society, polity, economy, environment, science and technology, disaster, security, every other aspect that's there in the GS ka syllabus or your optional syllabus, right? So you will borrow the content from your GS and optional, but you will write the essay in your own manner, which involves a perfect articulation which shows the expression of what you are thinking about the topic, right? In essays, flow का बहुत ज़्यादा importance है. Flow comes first. If I prioritize flow and content, flow of the essay for me is very important, then comes the content. बट इट्स नॉट लाइक कि आप फ्लो के पीछे भाग रहे हैं और कंटेंट सारा का सारा पीछे छूट गया. इट्स नॉट लाइक दैट. फ्लो एंड कंटेंट नीड्स टू बी go side by side at tandem. Flow becomes important because even if you are not, if your diversification of the topic is limited but you have a very good flow in your essay, then that diversification point will get subdued by a very good flow, and you will get better marks than your peers. So that's why articulation and flow becomes very important. Now, talking about the first thing about picking the topic, read the topic very well, because in essay you will get ample amount of time, right? So you need to be very sure about कौन सा टॉपिक आपको पिक करना है एंड कौन सा टॉपिक आपको छोड़ना है. Just don't go after the topic which is very unique in nature. Set your comfortability first, because you are the person who's writing the essay, not the other one, right? So it's not like कि आप उन टॉपिक्स को चूज कर रहे हैं विच इज द ऑड वन आउट टॉपिक ऑफ दैट ईयर, राइट? यू शुड बी एबल टू चूज एंड पिक द टॉपिक जिसमें आप उस टॉपिक को एक्सपैंड कर सकें, जिस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपके पास बेस्ट लेवल पे है, राइट? सो that's why first thing is choose the topic in which you are comfortable in both the essays, section A as well as in section B. हो सकता है कि दोनों के दोनों टॉपिक्स फिलोसॉफिकल चूज हों, बिकॉज these days we are observing that all the 10 essays or 8 essays that are given in the question paper carries the philosophical tone, right? तो philosophical tone से डरने की जरूरत नहीं है. उसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि philosophical essays को कैसे हम एक्सपैंड कर सकते हैं, बट at this point of time I'm talking about the general structure of the essay, then I'll come into the detailing of it. So yeah, first thing, topic ka selection. Topic ka selection should be based upon your comfortability. Afterwards, जब आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया है, तो लिखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या लिखना है. क्या लिखना है ये पता चलेगा with the help of good brainstorming in the piece of paper towards the end, जो कि रफ शीट होती है एक एग्जामिनेशन हॉल में. जो हमें पेपर मिलता है उसमें रफ शीट प्रोवाइड करी जाती है, तो उसमें आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करके रखना है. Now, brainstorming, what consists of brainstorming, what you should be writing in those rough sheets, इसके बारे में clarity of thought होना चाहिए, right? Brainstorming करते समय you need to put in the keywords, that's it. You should not be writing the complete sentences. Brainstorming एक helping hand की तरह काम करेगा, because while you are writing the essay, आपके पास सोचने का समय नहीं होगा.
you have the content in your mind, you have prioritized the content as well. ठीक है, कौन से पैराग्राफ के बाद कौन सा पैराग्राफ आना है ये भी आप ब्रेनस्टॉर्मिंग में डिसाइड कर चुके होगे। आपको सिर्फ और सिर्फ लिखना होगा विद गुड हैंड राइटिंग एज वेल एज गुड इंग्लिश। गुड इंग्लिश का मतलब ये है कि ग्रामर और सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छा होना चाहिए, जिससे एग्जामिनर को पढ़ के इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, एग्जामिनर का काम आसान करना इज आवर मोटिव। जितना काम हम उसका आसान करेंगे उतने ज्यादा मार्क्स हमें मिलेंगे। तो सेकंड थिंग इज ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, द टॉपिक दैट यू आर पिकिंग इन, उसमें आपकी कमांड होनी चाहिए, उसके कोर को हिट करता हुआ एक एक्सप्लेनेशन होना चाहिए आपके दिमाग में। राइट, कोर को हिट करता हुआ एक्सप्लेनेशन का मतलब ये है कि द टॉपिक दैट यू आर पिकिंग इन, उसका रीजन आपको पता हो, उसके पीछे एक क्लैरिटी ऑफ थॉट हो, so that you can explain the topic in your own words in the initial pages of your essay. Like initial 2-3 pages are very very important, क्योंकि वो सबसे पहले एग्जामिनर रीड करता है और उससे एक पिक्चर आपकी एग्जामिनर के माइंड में बन जाती है, दैट सेट्स द टोन फॉर द एसे, एंड इट इवेंचुअली बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट डिसाइड्स कि एग्जामिनर को आगे पढ़ना भी है या नहीं पढ़ना है। राइट, और अगर उसे लगेगा कि ठीक है, इट्स द स्टूडेंट हैज अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, वो आगे भी रीड करेगा और मार्क्स भी अच्छे देगा, बट अगर ये उल्टा पड़ गया देन यू विल लूज आउट मार्क्स इवेंचुअली। ठीक है, तो दैट्स द इम्पोर्टेंट पार्ट एज वेल। नाउ कमिंग ऑन द ब्रेनस्टॉर्मिंग पोर्शन। ब्रेनस्टॉर्मिंग में जब आप ऐसे लिखोगे तो यू नीड टू कीप इन योर माइंड दैट 10 to 12 पेजेस हमें फिल करने हैं एनी हाउ। ठीक है, 10 to 12 पेजेस फिल करने हैं, तो पेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाउ आर यू गोइंग टू डिवाइड द एसे इनटू मल्टीपल पार्ट्स। दैट्स व्हाई दैट्स हाउ जो डाइवर्सिफिकेशन का फैक्टर है वो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग में ही रिजॉल्व कर लेंगे। ड्यूरिंग द राइटिंग हम उस फैक्टर को पकड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रेनस्टॉर्मिंग हमें अपना ऐसे डाइवर्सिफाई करके रख लेना है सो दैट वाइल राइटिंग उसमें प्रॉब्लम ना फेस हो। तो ड्यूरिंग ब्रेनस्टॉर्मिंग हमें फर्स्ट चीज ये देखनी है कि व्हाट काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन वी आर गोइंग टू राइट। अब इंट्रोडक्शन लिखने के 2-3 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज जस्ट टू एक्सप्लेन द ऐसे, जो भी ऐसे का टॉपिक है उसके कीवर्ड्स को पकड़ा और वहां से एक्सप्लेनेशन अपना शुरू कर दिया। दैट्स अ वेरी जनरल वे, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। Second level of explanation could be anecdotes. Yes, Sakshi. Anecdotes में you are writing a fictional story or you are writing a real life story regarding a famous personality or any of your own personal events. यहाँ पे anecdote should be related to the topic that is given. ठीक है, उससे different anecdote करोगे तो फिर you are not hitting the bullseye. You are beating around the bush and that will set the negative tone of your essay. Quotation, yes, quotation is also a good way, but coming to the anecdote, anecdote में प्रॉब्लम यूजुअली ये होती है कि वी गेट इन्वॉल्व इनटू एनेक्डोट सो मच सो दैट कि 2-3 पेजेस का एनेक्डोट ही चलते रहता है। वैसा नहीं होना चाहिए। एनेक्डोट शुड गेट कंप्लीटेड विद इन 1 पेज ऑफ योर एसे, 1 पेज या फिर स्मॉल पोर्शन ऑफ द सेकंड पेज, दैट्स इट। राइट द एनेक्डोट, make it explanatory in nature so that you should not be using the second paragraph to explain the anecdote. ठीक है, in the worst case if it is required then use the one extra paragraph to explain the anecdote and relating that anecdote to the important topic. That's acceptable, but not beyond that. After that second paragraph you need to switch to the explanation, which I call the thesis of the essay. Thesis of the essay becomes very core to the topic because here you will explain your personal understanding. यहाँ से एग्जामिनर को पता चलेगा कि इस स्टूडेंट के दिमाग में क्या है। ठीक है, यू नीड टू एक्सप्लेन द एथिकल पोर्शन ऑफ द essay. You need to explain the why part of the essay. For example, the topic that I can remember is ships are not meant to be parked in the harbor, they are meant to go into the sea. इस तरह का एक रिलेटेड टॉपिक है जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है। तो अगर इस टॉपिक की बात करें तो फिर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि why is it so, why ships are not meant to parked in the harbor and why they are meant to go into the sea and what are the challenges, what are the difficulties. इसका एक glimpse आपको देना पड़ेगा अपने thesis में, and that thesis should consist of 1.5 to 2 pages.
where you will give very few examples and you will try to explain the topic in your own words. यहाँ पे जो आप पेपर 4 के एथिक्स में प्रिपेयर करोगे, जहाँ पे एटीट्यूड की बात होती है, एप्टीट्यूड की बात होती है, इथिकल वैल्यूज की बात होती है, एथिकल डिलेमा की बात होती है, वो सारी अंडरस्टैंडिंग आप अपने थीसिस स्टेटमेंट में प्रोवाइड कर सकते हो एग्जामिनर को. तो दैट सेट्स अ वेरी गुड टोन फॉर योर एसे. ठीक है, जब ये बेस हम बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर कर लेते हैं, इफ आवर फाउंडेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, देन एग्जामिनर गेट्स इंटरेस्टेड टू रीड द फर्दर पार्ट ऑफ द एसे एज वेल. ठीक है, दैट्स व्हाई थीसिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जो थीसिस के कीवर्ड्स हैं, व्हाट काइंड ऑफ स्टेटमेंट दैट यू आर राइटिंग, और एक दो एग्जांपल्स दैट यू आर गोइंग टू पुट इन, ये आपके ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले रफ वर्क में होना चाहिए. ठीक है, दैट्स व्हाई, दैट्स हाउ यू विल सेव टाइम. ब्रेनस्टॉर्मिंग के रफ वर्क में ये सारी चीजें होंगी, तो यू विल नॉट स्पेंड टाइम इन थिंकिंग कि अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, उसका अगला स्टेटमेंट मुझे क्या लिखना है. राइट, दैट्स हाउ यू विल सेव टाइम एंड दैट्स हाउ यू विल मेंटेन द फ्लो ऑफ द एसे, कंटिन्यूटी ऑफ द एसे. फर्दर आफ्टर थीसिस, अब बात आती है ऐसे के डाइवर्सिफिकेशन की. तो डाइवर्सिफिकेशन हमें दो तरीके से करने होते हैं. फर्स्ट इज टेम्पोरल डाइवर्सिफिकेशन, सेकंड इज स्पेशियल. टेम्पोरल की बात अगर करी जाए तो यू नीड टू टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ दैट टॉपिक. फॉर एग्जाम्पल, जो सिमिलर टॉपिक मैंने अभी लिया था शिप वाला, शिप्स आर नॉट मेंट टू बी पार्क्ड इन द हार्बर बट दे आर मेंट टू गो इनटू द सी. इससे रिलेटेड आपको हिस्ट्री से कुछ कंटेंट निकालना पड़ेगा. दैट we should not be we should not get complacent with our efforts. We need to work hard to reach new horizons. यहाँ पे आप एग्जाम्पल उठा सकते हो एंशियंट हिस्ट्री, या फिर और अर्ली मैन की तरफ जा सकते हो. वहाँ पे जो हमने इन्वेंशंस किए थे व्हील्स के, फायर्स के, दोज वर द इम्पोर्टेंट इन्वेंशन ना. That's how we started our civilization. आईवीसी का एग्जाम्पल लिख सकते हो. करंट पर्सपेक्टिव में आके मॉडर्न हिस्ट्री से एग्जाम्पल्स उठा सकते हो, एंशियंट हिस्ट्री से उठा सकते हो, वर्ल्ड हिस्ट्री से उठा सकते हो. बट एग्जाम्पल्स शुड हैव सब्सटेंस एज वेल. ठीक है, सिर्फ एग्जाम्पल से अपने पैराग्राफ को फिल नहीं करना है. हर एक पैराग्राफ में एक इंडिविजुअल एक्सप्लेनेटरी टॉपिक होना चाहिए और उसको सब्सटेंशिएट करता हुआ एक एग्जाम्पल होना चाहिए. तो इस तरह की चीजें आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग जो आप करोगे वहां पे विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स मेंशन करनी है कि दिस शुड बी माय लेआउट ऑफ द एसे. दैट्स हाउ यू विल सेव टाइम, दैट्स हाउ यू विल कंप्लीट योर एसे इन टाइम. और पैनिक नहीं करोगे, अदरवाइज जब टाइम निकलने लगता है तो फिर ऐसे लिखने में स्टूडेंट्स पैनिक करने लगते हैं. राइट, फर्दर थीसिस हो गया. थीसिस के बाद हम टेम्पोरल डिस्कशन कर चुके हैं ऐसे का. टेम्पोरल डिस्कशन शुड नॉट गो बियॉन्ड 1 और 1.5 पेजेस. राइट, अभी तक हमने कितने पेजेस फिल किए हैं? फर्स्ट पेज विद द एनेक्डोट, स्टार्टिंग विद द सेकंड पेज एंड द थर्ड पेज योर थीसिस स्टेटमेंट हैज बीन कवर्ड. फोर्थ पेज में हमने कवर किया है टेम्पोरल पर्सपेक्टिव. उसके बाद स्टार्टिंग फ्रॉम द फिफ्थ पेज उस ऐसे को स्पेशली डिवाइड करना है. स्पेशली का मतलब है कि सोसाइटी का डिस्कशन करना है, पॉलिटी का डिस्कशन करना है, इकोनॉमी का डिस्कशन करना है. नाउ इन दिस पोर्शन एज वेल, जब आप सोसाइटी का डिस्कशन कर रहे हो तो सोसाइटी में फिर 2-3 एस्पेक्ट्स को उठा के लेके आओ. फॉर एग्जाम्पल, वन एस्पेक्ट कुड बी वुमेन, सेकेंड कुड बी वल्नरेबल सेक्शन, थर्ड कुड बी फार्मर्स, राइट, फोर्थ कुड बी पुअर पीपल which are related to the society. यहाँ with the help of this you will be able to diversify your topic and you will eventually get content which will be representable और बाकियों से काफी different होगा. Yes, पेस्टल अप्रोच के बारे में बात करते हैं, बट या इन जनरल इस तरह का आपको डिवीजन करके लेके आना है. पॉलिटी की अगर मैं बात करूं तो पॉलिटी में यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट डेमोक्रेटाइजेशन, ऑलवेज टॉक अबाउट 73rd 74th अमेंडमेंट, अबाउट पंचायत्स एंड अबाउट अदर एस्पेक्ट दैट यू आर रीडिंग इन योर लक्ष्मीकांत एंड ऑल. तो यहाँ पे भी पॉलिटी का 2 से 3 डिवीजन होगा. राइट, देन कमिंग ऑन टू द टेक्नोलॉजी पोर्शन, द सिक्योरिटी पोर्शन, द इंटरनेशनल रिलेशंस पोर्शन. राइट, अब यहाँ पे बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं टू डाइवर्सिफाई योर ऐसे. स्पेशली यहाँ पे यू नीड टू बी पिक एंड चूज. ठीक है, यू हैव द लग्जरी टू पिक एंड चूज. कुछ टॉपिक्स को आप पिक करो विच आर वेरी मच रिलेटेड टू द मेन टॉपिक ऑफ द एग्जाम. ठीक है, वहां मेन टॉपिक से रिलेटेड हो, प्लस you are able to explain them in a lucid manner because you have good examples regarding that particular topic. ठीक है, तो उन टॉपिक्स को चूज करना है जहां पे आप एग्जांपल्स अच्छे से दे सकते हैं. Then moving on,
टूवर्ड्स द एंड जो सेकेंड हाफ ऑफ द ऐसे होगा, ठीक है, यहाँ स्पेशली हम 3 से 4 पेजेस ट्राई करेंगे फिल करने का. नाउ लेटर हाफ ऑफ द ऐसे में हमें उस पर्टिकुलर ऐसे के चैलेंजेस को डिस्कस करना है, लाइक शिप्स इन द हार्बर और इन द सी. यहाँ पे हमें उसके चैलेंजेस को डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाई शिप्स आर स्टैंडिंग इन द हार्बर. ठीक है. इनिशियली जब हम थीसिस स्टेटमेंट लिख रहे होंगे तब हम शिप्स का मतलब क्या होता है, हार्बर का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, इसको समझा चुके हैं. ठीक है. अब जब लेटर हाफ में हम उसके चैलेंजेस को डिस्कस कर रहे हैं तो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग हमने थीसिस में दिखाई थी, विद द हेल्प ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग हमें अब उस ऐसे के चैलेंजेस को डिस्क्राइब करना है. Now, after describing the challenges, you need to give the solution as well. Solution part also becomes very important because you cannot leave your essay. You are applying for the job which is solution oriented, right? Problem oriented job nahi hai. You will be thrown with the problems. You need to give solutions. So that's why solution becomes an essential part of the essay. यहाँ पे आपको solution 2-3 aspects में देने पड़ेंगे. You need to be focusing upon the core aspects like what are the ethical understanding, how can you improve upon children, how can you improve upon the social ethics to improve the to arrive to the main goal of your essay, right? शिप्स का ही एग्जांपल अगर लें तो हाउ कैन यू मेक योर सोसाइटी केपेबल इनफ टू थ्रो देयर शिप्स टू गो इनटू द सी एंड टू नॉट गेट मोटिवेटेड टू रिस्ट्रिक्ट देम इनटू द हार्बर. ठीक है. तो इस तरह का एक्सप्लेनेटरी एक्सप्लेनेशन होना चाहिए सॉल्यूशन के फॉर्म में. ये सारे पॉइंट्स जब आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे एक सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में एग्जाम्पल्स होने चाहिए. तो दैट्स हाउ आई थिंक एवरी पैराग्राफ शुड हैव एटलीस्ट वन एग्जाम्पल, one related example, because writing example provides the examiner a viewpoint that yes, this student has got the point and it is not he or she is not talking in air, उसमें substance है. तो दैट्स वाई सॉल्यूशन के बाद फिर जो लेटर 2 एस्पेक्ट्स बचते हैं जहां पे एक एंटीथेसिस लिखा जाता है एंड वन पार्ट लेफ्ट इज द कंक्लूजन. तो ये लास्ट के 2 से 3 पेजेस आपको लिखना होगा. एंटीथेसिस में आपको ये एक्सप्लेन करना होता है कि यू नीड टू निगेट द टॉपिक इन एंटीथेसिस. यही अगर एग्जांपल लें कि शिप्स आर नॉट मेंट फॉर द हार्बर एंड दे शुड बी गोइंग इनटू द सी, इसका एंटीथेसिस ये होना चाहिए कि sometimes ships has to come to the harbor for repair work, right? अब यहाँ पे भी मैं indicative words use कर रहा हूँ, ये explanatory words मैं use नहीं कर रहा हूँ because ships means something, harbor means something. ठीक है. That depends from person to person. For example, if I talk about if I'm considering ships as students and harbor as their house, then those particular students should be coming back to their home time to time to recuperate themselves, to rejuvenate themselves, right? For example, अगर कोटा का एग्जांपल लें, कोटा में बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं तैयारी करने के लिए फॉर द 11th एंड 12th जेई एंड नीट एंड फॉर मेडिकल एंड इंजीनियरिंग. तो उन्हें बीच बीच में घर आते रहना चाहिए सो दैट देयर मेंटल स्टेट कैन नॉट गेट हार्म्ड, राइट? सो दैट्स व्हाई शिप्स शुड बी कमिंग बैक टू द हार्बर टाइम टू टाइम फॉर रिपेयर वर्क. इस पर्सपेक्टिव को एक्सप्लेन करता हुआ एक एंटीथेसिस होना चाहिए दैट ब्रिंग्स अ न्यू पर्सपेक्टिव इन योर एसे, जो कि आपको बहुत स्टूडेंट से अलग कर देगा. क्योंकि एंटीथेसिस एक तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में नहीं आता है और उसको एक्सप्लेन करता हुआ स्टेटमेंट बनाना या फिर आर्टिकुलेशन करना, इट ऑल्सो बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम. तो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ड्यूरिंग प्रैक्टिस सेशंस आप इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे तो दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू ऑल. टुवर्ड्स द एंड जब कंक्लूजन लिखोगे, कंक्लूजन में भी यू शुड बी वेल अवेयर कि कंक्लूजन करना कैसे है. तो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स यू विल बी राइटिंग इन योर ब्रेनस्टॉर्मिंग इटसेल्फ, राइट? हमारा ऐसे किस तरफ जा रहा है, कहाँ पे हमें खत्म करना है उस ऐसे को, इसकी इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसका नॉलेज हमें पहले से होना चाहिए. तो वन गुड वे टू स्टॉप योर ऐसे, टू कंक्लूड योर ऐसे इज जिस एनेक्डोट से आपने शुरू किया था उसी एनेक्डोट के मेन कैरेक्टर को लेकर के कंक्लूड कर दो. Second method could be writing the related quotation of any famous personality towards the end. Third method could be just concluding whatever you have written over the past 10-11 pages in the last page. 3-4 तरह के conclusion हैं, right? So this becomes the major layout of the
essay what you can write. अब थोड़ा सा अगर डिटेल में बात करें, आई वांट टू टॉक अबाउट द आर्टिकुलेशन ऑफ द एसेज. तो आर्टिकुलेशन का मतलब ये होता है कि व्हाइल रीडिंग योर एसे द एग्जामिनर और द रीडर शुड नॉट फील कि अचानक से कुछ नया टॉपिक आ रहा है. He or she should feel the interconnection between the paragraphs, right? So that's how the connecting words becomes very important for you. सो ये सेकेंड लेवल ऑफ प्रिपरेशन होगा. फर्स्ट लेवल तो ये हुआ कि आपको डाइवर्सिफिकेशन करना आना चाहिए टॉपिक का. उसके भी पहले आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए. यू नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक, डाइवर्सिफाइंग द टॉपिक, ब्रेन स्टॉर्मिंग इट एंड देन राइटिंग इट. वाइल राइटिंग यू विल फेस द फर्स्ट चैलेंज एज आपके पैराग्राफ्स जंप होंगे, राइट. पैराग्राफ जंप होंगे, उनमें इंटर रिलेशन की कमी रहेगी, पैराग्राफ्स बड़े बड़े आएंगे. यू नीड टू बी कटिंग देम शॉर्ट, मेकिंग देम क्रिस्पर, कनेक्टिंग द पैराग्राफ्स विद द हेल्प ऑफ इंटरकनेक्टिंग वर्ड्स. ठीक है. तो ये कुछ चीज़ें होंगी जो इनिशियली ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स को फेस होंगी, बिकॉज इट्स अ प्रोसेस एंड यू कैन नॉट जंप इट. यू नीड टू गो फॉर ये डिफिकल्टीज को क्रॉस करते हुए ही आपको एक अच्छा ऐसे लिखने को मिलेगा. नाउ सेकेंडली अभी अगर जिन्होंने ऐसे लिखना शुरू नहीं किया है, या फिर जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है या फिर जिनका सेकेंड अटेम्प्ट है, आई विल सजेस्ट कि थोड़ा सा वेट कर लो. दिस इज नॉट फॉर द थर्ड एंड फोर्थ अटेम्प्टर. फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट वालों के लिए ये है कि थोड़ा सा वेट करो. लेट द कंटेंट बिल्ड by reading your GS 1, 2, 3, 4 and optionals. After 25-30 days आपके पास अच्छा खासा कंटेंट हो जाएगा. उसके बाद आप ऐसे राइटिंग, फुल फ्लेजेड ऐसे राइटिंग शुरू कर सकते हो. अगर अभी से आपको कुछ करना है तो यू कैन पिक अ टॉपिक एंड स्टार्ट राइटिंग 1 or 2 pages. दैट्स इट. दैट 1 or 2 page विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल व्हाइल यू विल राइट द थीसिस ऑफ योर एसेस. ठीक है. अभी आप कोई भी टॉपिक उठा के अपनी अंडरस्टैंडिंग लिखनी शुरू करो. You if you're not diversify if you're not able to diversify the topic today, it's well and good, it's acceptable, but understanding likhna shuru kar do. After 25-30 days you will get the content, because you eventually are reading GS 1, 2, 3, 4, right? या फिर अपने ऑप्शनल की पढ़ाई तो कर ही रहे हो, वहां से कंटेंट आपको मिलेगा और उसी कंटेंट को रिलेट करता हुआ ऐसे लिखा जाता है. कोई अलग से तैयारी नहीं लगती है ऐसे के लिए. देन कमिंग ऑन टू डिफ्रेंशिएटिंग योर राइटअप. ठीक है. दैट्स द थर्ड लेवल. थर्ड लेवल में आपके राइटअप का डिफ्रेंसिएशन होगा विद द क्वालिटी ऑफ एक्सप्रेशन दैट यू आर राइटिंग इन, विद द क्वालिटी ऑफ कोटेशन दैट यू आर गिविंग इन, विद द क्वालिटी ऑफ रेफरेंसेस दैट यू आर गिविंग इन टू योर राइटअप. रेफरेंसेस का मतलब किसी फेमस पर्सनालिटी का रेफरेंस होगा. जैसे कोई भी आप ऐसे लिखते हो, उसमें आप बुद्धा का रेफरेंस डाल सकते हो, उसमें आप स्वामी विवेकानंद का रेफरेंस डाल सकते हो, राइट. जो प्रीवियस गांधी जी का रेफरेंस डाल सकते हो. ठीक है. अब उस रेफरेंस को आप कोट कैसे कर रहे हो, that becomes very important. That decides the better articulation of your essay. ठीक है. तो यहाँ पे that becomes eventually becomes the third level of your essay. To decide it या फिर to prepare it पहले से you can compile some of the quotations. अनुदीप सर का आप नोट्स वगैरह देख सकते हो कि उन्होंने कैसे कोटेशन को कंपाइल कर रखा है, right? You can follow his notes and add something from your side as well. सिर्फ कोटेशन से काम नहीं चलेगा, कुछ कनेक्टिंग वर्ड्स भी होने चाहिए, कुछ फ्रेजेस भी होने चाहिए इंग्लिश के, बिकॉज इवेंचुअली यू आर राइटिंग इंग्लिश, राइट. एंड दैट पेपर विल इवेंचुअली बी चेक्ड बाय प्रोफेसर हु हैज अ वेरी गुड कमांड इन इंग्लिश. तो इंग्लिश की लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी भी अच्छी होनी चाहिए आपकी. that eventually becomes your level 4 of the essay. ठीक है. इस तरह से लेवल 1, 2, 3, 4, उसके ऊपर भी काफी सारे लेवल्स हैं. बट स्टार्ट राइटिंग, उसके बाद फिर इंडिविजुअल गाइडेंस की जरूरत पड़ती है. उसके बाद ऐसा होता है कि जनरल बात करने से आपको फायदा नहीं होगा. जैसे अभी हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं जस्ट टू स्टार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर essay. टुवर्ड्स द एंड हमें स्टूडेंट बाय स्टूडेंट डिस्कस करना पड़ेगा कि what further is required to improve the write up, what further is required to improve your marks in the essay, right? So that's how the discussion becomes individualistic in nature towards the later half of the preparation. ठीक है. So this ये जो मोटा मोटा हमें स्ट्रक्चर डिस्कस करना था, and how you can diversify your topic. Yes, I'm trying to speak in English. Actually, I'm speaking both the languages. I'll focus upon English more. So yeah, the basic discussion of the essay, how you should be structuring your essay, how you should be
pulling in the content that you have learned in 1 2 3 4 and your optionals that has been discussed. You got to be wary of, or you got to be vigilant of the related examples and the related keywords that you can put in your essays. And what, like I told, if you want to start your essay preparation from today onwards, you can do, but start focusing. First focus upon the thesis statement, first focus upon explaining the topic in 1 or 2 pages. Refining that explanation becomes very important, because until unless you refine the explanation, you'll not be able to crisp that content, right? Because you need to be very very expressive in yourself, because 10 12 pages are not enough to express yourself until you are smart enough. स्मार्ट प्रिपरेशन की ज़रूरत होगी, क्रिस्पर कीवर्ड्स की ज़रूरत होगी, जिससे कम राइटिंग में भी आप ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाएँ, राइट? यू नीड टू बी राइटिंग लेस एंड एक्सप्रेसिंग मोर. So that comes with a habit, that comes over time. So yes, you can start preparing your essays, you can start sending us for reviews, because we have a viral initiative which was there for last year as well. And Swati has scored the highest marks in ethics. 158 are the highest marks as of now, because I have not listened more than that. So yes, one of our student has scored this much marks. So we are confident enough that we can guide further. We can guide to improve your marks, to improve your expression, which will help you further to sail through. Because essay eventually becomes very important, because यहाँ पे you can score till 150 160, which is impossible in any of the GS or the optionals, right? So this provides a very important scope, and eventually it eases down your burden towards the interviews, right? So that's why. So this is the basic discussion that I wanted to make regarding essays. And yes, I'll take the questions now. You people can write the questions in the chat box. I'll take it one by one. I'll take it one by one. Whatever have been written, I'm just reading it. Anecdotes कहाँ से pick कर सकते हैं? Arshi Safi. Right. Anecdotes, there's no single collection of anecdotes. You need to be picking them from whatever content you're reading in 1 2 3 4. ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि that should be related to the topic. That should not be very different from the topic. Right. कुछ anecdotes ऐसे होते हैं जो आप वहाँ बैठ के भी manufacture कर सकते हो. That can be fictional stories. Right. But that should be related to your topic. If we are starting with anecdotes, then we are supposed to end it with the same anecdotes in the conclusion as well. No, it's not a hard and fast rule. It is one way to end the essay with a similar kind of anecdote, so that it can give a feel of a closing statement. But you can do it otherwise as well. If you have different ideas, if you have better ideas, go for it. Go for it. Can we use imaginative examples or stories as introduction? Yes, imaginative examples and stories can be used in the introduction, but just don't try to use them in your content. Try to give real objective examples in your content. Avoid this. And you can start with fictional stories. I prepared my essay over specific topic like women. Also, I've read another Shetty's book on essay. Okay. Can I send essays to you on Telegram? Yes. जो अविरल इनिशिएटिव है, ठीक है, अविरल में हमारा जो फॉर्मेट है वो ये है कि यू कैन सेंड अ वीकली एसे टू अस. तो उसका हम रिव्यू करके आपको देंगे. वी विल हैव अ चैट और टॉक विद यू टेलीफोनिकली और विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट, जिससे आपकी एक रेगुलरिटी बनी रहेगी ऐसे के रिगार्डिंग. प्लस उसमें आप आंसर्स भी भेज सकते हो ऑन डेली बेसिस. 2 आंसर्स कैन बी सेंट एंड 1 essay per week can be sent. So yes, you people can join that initiative. You people can get attached with us, because many students are getting their reviews, and we have given the essay topper this year as well, so that you can have faith in our evaluation as well. तो इस तरीके से आप कर सकते हो. कैन यू गिव एग्जांपल ऑफ हाउ टू कनेक्ट पैराग्राफ्स? राकेश, कनेक्टिंग वर्ड्स को यूज करना पड़ेगा, राइट? यू नीड टू, जब आप न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हो ना, you guys should be reading newspapers, you guys should be reading model answers these days, right? So while reading newspapers, you need to be very vigilant that how they are connecting the paragraphs, because there's no one way or one line that I can explain
with the help of which you will get a nag of how to connect the paragraph, right? So that's why conclusion can be way forward that we write for challenge, or it should be different. It should be different, Manan. It should be different. Way forward is the solution that you are providing, kind of solution. If I'm getting it right, right? Way forward can be a very good solution, but conclusion थोड़ा सा different होता है. What is exactly mean by diversifying the essay? Diversifying the essay, Richie, it means dividing the essay into multiple topics like society, polity, economy, science and technology, security, disaster management, international relations, every other topic that you're reading in GS 1, 2, 3, 4. So that's where I mean the diversification of the topic. यहाँ पे like I said earlier कि you need to be choosy with the kind of topic you want to pick in for diversification, because जो topic आप pick कर रहे हो that should be very well related to the topic of your essay, right? So यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, otherwise कई बार ये होता है कि हम topic pick कर लेते हैं diversification के लिए but we are not getting the content right. Yes. Anyone else? अगर कोई question है तो you can put it in the chat box. I'll try to address it because I have explained the general part of the essay. Now it's going to be a special kind of discussion with individual student that we can do while you people can join Aviral. Explanation also need to be connected with these topics or just the examples. Explanation also need to be connected with these subjects or just the examples. Richie, I'm not getting your question. If you can simplify, that will be good. How to add map in answer writing? Barkha, the session is not regarding answer writing, it is regarding essay, but still, uh, adding the map is adding the map gives the good representation of the content of your answer, and it also eases you down in the number of words that you are writing. ठीक है, तो it you can draw a map subject wise. For example, if you're trying to make it for history, towards the introduction या फिर content के अंदर ही आपको किसी किसी रीजन को शो करना है या फिर अशोका के एम्पायर को शो करना है, इस तरह के मैप्स आप बना सकते हो. Or if you're drawing the map for geography, then you can point out the location, you can point out the region, you can point out the mountainous regions as well. So it depends from question to question how you can add the maps. If you give reference of book, should it be the example only or can also be used as explanation? It can also be used as explanation of the topic, man. While diversifying essay, do we need to give example explanation in each para related to the GS subject, or just example need to be? No, explanation should be there, Richie, because while you're writing the paragraph, it should have an important content which you will explain, and the examples will support that explanation. That's it. Because you cannot fill all the pages with the help of examples only. That's not a good way. Philosophical essay के लिए क्या source होना चाहिए? Philosophical essay, yes. I was about to talk about philosophical essay. Philosophical essay के लिए कोई भी particular source नहीं हो सकता, right? It depends upon your own understanding. जितना wide spectrum में आप reading करते हो, जितनी understanding आपकी है, that's how you will start deciphering the main content या फिर core part of the essay. ठीक है? So just the topic that I picked earlier, ship, harbor, and sea wala, because ships are not meant to be parked in the harbor; they are meant to go into the sea. इस टॉपिक का इंटरप्रिटेशन हर किसी का अलग अलग होगा, बट until unless it is pointing towards the main core content of the topic, it's good. जैसे लास्ट ईयर एक टॉपिक आया था, यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर, राइट? यहाँ पे आपने कैसा इंटरप्रिटेशन लिया है, दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू शेप द एसे. तो यहाँ इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर सोर्स बता पाना मुश्किल है. यू शुड बी रीडिंग न्यूज़पेपर्स, यू शुड बी रीडिंग मल्टीपल सोर्सेज, यू शुड बी रीडिंग. अच्छा, इस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए आप रीडिंग नहीं करेंगे. इन जनरल आप जब रीडिंग कर रहे हैं, यू शुड बी इंक्विजिटिव इनफ कि इसका मतलब क्या है, आप समझ के रखें. ठीक है? बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि आपने जो ऐसे या कोटेशन पढ़ रखा है वही एग्जाम में आएगा, कुछ और आएगा एग्जाम में.
और वहाँ आपको उसे डिसाइफर करना होगा, राइट? सो इफ यू कैन अंडरस्टैंड हिंदी एज वेल, देन ट्राई टू रीड द हिंदी स्टेटमेंट ऑल्सो, जिससे डिसाइफरिंग आसान हो एंड यू कैन बैंग ऑन इन योर इंटरप्रिटेशन ऑफ द टॉपिक. It's easy to cater GS specific essay topics, but I face problem in writing and framing answers for philosophical essays. Philosophical essays में अगर आप उसका मतलब समझ चुके हैं, then you can easily relate that meaning to every other diversified topic that I talked about, right? शिप्स हार्बर एंड सी वाला जो टॉपिक है, यहाँ पे आप इजीली उसको सोसाइटी से कनेक्ट कर सकते हो, हमारे साइंस एंड टेक के पोर्शन से कनेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे इसरो का एग्जांपल आएगा, हाउ इसरो गॉट स्टार्टेड. इसरो कैन बी अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन एज वेल फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, राइट? सो यू नीड टू बी रिलेटिंग दैट टॉपिक, दैट अंडरस्टैंडिंग विथ मल्टीपल टॉपिक्स. बिकॉज फर्दर फिलोसॉफिकल एसेस के लिए हमें इंडिविजुअल डिस्कशन करना होगा, दैट देयर इज नो वे दैट आई कैन टेल इन अ जनरल मैनर और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए. ठीक है, मैं इंडिकेटिव डिस्कशन यहाँ पे कर सकता हूँ, थोड़ा लिमिटेशन होता है जब हम जनरल क्लासेस लेते हैं, तो दैट्स वाई. When you look options of philosophical essay, what the criteria you take to choose to write? The criteria should be your understanding. कितना easily आप उस essay के topic को explain कर सकते हो. Because the easier you understand, the better you can relate it to multiple other diversified subjects that we have talked about: society, economy, polity, every other, environment. Linked all contain what? Ask question. Burkhan, I'm not getting it. Sakshi, sir, are we supposed to read non-fictional, life-changing, self-help books for these? You can write if you feels like it is relevant to your topic. You can write it because you are free to express yourself in essays. You can do whatever you feels like to differentiate your topic or to express yourself better. ठीक है. Don't get very much involved in reading these books. Yes, read it towards the end. पहले एग्जाम दे लो, एग्जाम क्लियर कर लो, फिर आराम से पढ़ना. और अगर कोई डाउट नहीं है, then I'll close the session because this session will be there in YouTube. You can watch it further as well, right? So I think there's no further questions. Okay, thank you. Thanks for joining. I'll stop the streaming here and you can watch the session further as well because the recording will eventually get uploaded, right? या द लास्ट वन. कितने डायमेंशन में एक फिलोसॉफी ऐसे सोचना चाहिए बिफोर अटेम्प्टिंग इट? एक डायमेंशन को अच्छा लंबा लिखें या फिर शॉर्ट शॉर्ट करके बहुत सारे डायमेंशंस? सस्मिता, एक डायमेंशन को अगर लंबा लिखेंगे ना, देन ऐसे का डाइवर्सिफिकेशन बहुत कम होगा. एग्जामिनर विल नॉट बी इंटरेस्टेड टू रीड आउट योर ऐसे. ठीक है, तो इसलिए डाइवर्सिफाइड टॉपिक्स पे हमें लिखना होगा. छोटा छोटा कंटेंट लिखो, लेकिन 5 से 6 टॉपिक्स हमें उठाने पड़ेंगे, 5 से 6 सब्जेक्ट्स हमें उठाने पड़ेंगे. ठीक है, ओके ओके. I'll end the session now. ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग.